आज के इस वीडियो में हम IPO की नहीं बट एक रिवॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। For those of you who don't follow me on Instagram, I had uploaded one story that should I make a full detailed video on Zomato's first IPO launch, and most of you said yes. So on your behalf, I have done my research, complete thorough research, and in the end of this video also I'll share my personal opinion that should you invest or not. Alright, so Zomato is India's first company जो कि stock exchange list इंडिया में list होगी like NSE and BSE. Also, it is India's one of the biggest startup, tech startup I would say. But it's just a beginning. After that, you'll get to see so many startups like Policy Bazaar, Nykaa, Delivery will launch their IPOs in upcoming months or year. And I think before we directly jump on Zomato's IPO, it's better to see things in introspection. And by that I mean like Zomato से भी पहले somewhere around 2010 or 11, Make My Trip MMT had launched their first IPO, and उसमें जो first initial share price रहा था वो $14 था, and right now it's $28, और कंपनी ने 70% तक जो लिस्टिंग हुई थी उतना कर भी लिया था, but still Make My Trip could never make profit even today, and the reason was very simple, because of huge losses and expenses perpetually. And same happened with Zomato. If you'll see the data of Zomato of previous 2 years, Zomato had failed horribly in terms of profit. Like there were revenues, but in terms of profit कुछ भी नहीं था. कंपनी को बहुत सारे losses हुए, especially expenses बहुत ज़्यादा रहे Zomato के. So I think it's enough to understand the basic things about IPOs. Let's directly talk about Zomato, right? So Zomato had started by Pankaj Chadha and Deependra Goyal in 2008, and before that they both used to work in Bain.in. और वहाँ पे उन लोगों ने एक चीज़ देखी कि रेस्टोरेंट के बाहर बहुत लंबी लाइन होती to place their first order, and they found out कि it's a complete waste of time. तो उन्होंने सोचा कि कुछ solution निकालते हैं, and to resolve that problem they came up with a solution called foodebay.com. They simply created a mobile app in which they enlisted the menu cards of restaurants and also details. लोगों को उससे प्राइजेस पता चल रहे थे and also details मिल रही थी रेस्टोरेंट की, और Zomato के पास इतना खतरनाक वाला डेटा है ना कि they know कि कौन सी सिटी में, कौन से एरिया में लोगों को क्या खाना पसंद है, किस टाइम पे खाना पसंद है, किस प्राइस पे चाहिए. The data that Zomato is having right now is amazing. So हुआ क्या कि they came up with a solution called foodebay.com, और वहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन भी ऐड करा उस ऐप में, and there was an option called book your table, so people can easily book their table already, so जिससे कि लोगों को लाइन में ना लगना पड़े. So gradually Foodebay did an amazing job, and right after that they changed the name from foodebay.com to Zomato, because Foodebay is kind of difficult to pronounce and they just want to make it simple, so they gave a name called Zomato, and from there the journey had started. And यहाँ से they took another step, like they started food delivery options, and also यहाँ तक जो business model था वो B2C था, like business to consumer. लेकिन इसके बाद जो major step लिया, I would say was very difficult to all of them. यहाँ से उन्होंने पूरा मॉडल ही shift कर दिया, change is the wrong word, shift कर दिया B2B, like business to business. For example, like जो भी रेस्टोरेंट होते हैं, they need raw material to prepare our favorite dishes, right? So they started providing all the raw materials to all the restaurants जिन लोगों के साथ उनका टाइप था. उन्होंने सबको रॉ मटेरियल्स भी देना चालू कर दिया in a very organic way. Like वहाँ के जो local farmers थे, they had collaborated with local farmers, started producing organic raw material and started providing to the restaurant. तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल था. इसके बदले में Zomato को अच्छा खासा कमीशन मिलता था directly from a restaurant, right? And recently Zomato has announced that they'll start investing in Grofers. Grofers is simply a grocery delivery app जिसमें कि Zomato अपना इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और आई थिंक शुरू कर दिया. I'm not sure about it, but it is amazing. Zomato's growth story and a partner played a huge role, but उससे भी ज़्यादा अगर किसी का रोल रहा है तो that is InfoEdge. जिनको नहीं पता InfoEdge क्या है, InfoEdge is a parenting company of a Naukri.com.
और इसके जो फाउंडर है ही इज़ संजू बिखचंदानी। एंड एज यू कैन सी फ्रॉम लास्ट 2 months द प्राइस ऑफ इन्फो एज शेयर्स बिकेम डबल्ड। और ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हुआ। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड when Zomato started sharing the launch of his first IPO in the market, एकदम से InfoEdge के shares बढ़ने लगे। And because the InfoEdge has a significant amount of stake in Zomato, और इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है। I think we should start with the story of InfoEdge. So एक बार संजू बिखचंदानी, who is a founder of InfoEdge, had used a foodie bit to order his food and he liked it. उनको बहुत अच्छा लगा। He simply search the domain name और उस पर देखा कि किसका नाम रजिस्टर्ड है, and the name that came across was Deepinder Goyal. He is a co-founder of Zomato, by the way. Then he sent an email and उसमें ये बोला कि whenever you need capital you can contact me. फिर कुछ टाइम बाद उनका रिप्लाई आया दीपेंद्र गोयल का to संजू बिखचंदानी and they had fixed a meeting. सब कुछ फाइनल हुआ and finally in 2010 Zomato had raised $1 million. Seriously. So in conclusion, the moral of the story was, before investing in any company, not only Zomato, you need to watch the company's performance and hand in hand you have to check the investment that a company is making. So now the most important part of this video is coming out. I'm sharing my research here and also I'll read at the same time to be more accurate. So in the fiscal year 2019 and 20, the value of average order cost was rupees 264.6. Right, and that time Zomato used to take a commission of rupees 43.6 and delivery charges of rupees 15.3 and total करूँ मैं अगर तो होता है 58.9. Right, at the same time the expenses that the company was incurring that time was delivery cost of rupees 52 as you can see and discount of rupees 21. अदर वेरिएबल कॉस्ट वॉज रुपीज़ 15.7 और अगर इसका टोटल करूँ तो होता है 89.4. तो पिक्चर आपके सामने क्लियर है। लाइक नाउ यू कैन सी क्लियरली ऑन एवरी ऑर्डर दे यूज टू अर्न 58 रुपीज़, लेकिन साथ साथ एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं। तो सिंपली अगर मैं बताऊँ तो कंपनी वॉज लूजिंग 29.5 रुपीज़ ऑन एवरी ऑर्डर। तो यार देखो, बात बिल्कुल सीधी सी है कि पिछले 2 सालों में कंपनी को हुआ तो लॉस ही है, ये बात तो आप समझ ही चुके हो। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फन फैक्टर इज कमिंग अबाउट द फिस्कल ईयर 2021 बिकॉज द गेम हैड चेंज कम्प्लीटली ड्यू टू कोविड। सब अपने घर में थे, किसी को एक्सेस नहीं था रेस्टोरेंट तक जाने का, और यहाँ पे जोमेटो ने अपना हाथ मारा। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट 2021, तो जो एवरेज वैल्यू थी ऑर्डर की वो थी 264 इन 2019, बट ये अब हो चुकी थी 400 रुपये। लाइक एवरी ऑर्डर वॉज मिनिमम ऑफ रुपीज़ 400, बट एट द सेम टाइम कंपनी के एक्सपेंसेस 20 से ज़्यादा बढ़ते चले गए। इवन इन 2021 कंपनी ने सेल्स तो बहुत अच्छी कर ली है, बट दे कुड नॉट गेट अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। इन माई प्रीवियस रील आई टॉक्ड अबाउट like when you invest in something you should consider the PE value. In this case you cannot calculate the profit to earning ratio of Zomato क्योंकि प्रॉफिट कोई नहीं कंपनी को, सिर्फ सेल्स बढ़ी है और एक्सपेंसेस बढ़े हैं। ठीक है, तो द कंपनी हैव ऑलवेज बीन इन अ लॉस बट द सेल वाज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो आप खुद ही देख लो कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ डाल रही है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या रहा है एंड इसके कॉम्पिटिटर्स क्या है मार्केट में। While calculating all these things, you should make a decision that you should invest in